welcome back to my channel and welcome to another vlog. So in today's vlog I and mama are going to make the cake. So I will show you all the things that we are doing. So here I was greasing so that हमारा जो केक है वो अच्छे से डिमोल्ड हो जाए. So greasing करते करते मैं मम्मा से बात भी कर रही थी, so that's why I turned back. तो मुझे ग्रीसिंग में इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ, और अगर आप अच्छे से ग्रीस नहीं करोगे ना तो आपका केक निकलेगा नहीं, डिमोल्ड नहीं होगा. So in this vlog I have not shared the recipe of the cake because I have already shared it on my channel in Raksha Bandhan special video part 2, so you can go there and watch it. For the frosting I need compound, so I am adding dark compound and milk compound and I will melt it in microwave. तो गाइस यहाँ पर ये चॉकलेट मेल्ट नहीं हो रही थी, आफ्टर मैंने इसको 2-3 मिनट्स मेल्ट किया, बट अभी कंपाउंड मेल्ट नहीं हुआ है. सो हियर आई हैव एडेड मिल्क, और अभी मैं इसको थोड़ा सा स्पून से कर रही हूँ. सो अब इसको फिर मैं थोड़ा सा और मेल्ट करूँगी. तो गाइस मैं अभी बटर पेपर लगा रही हूँ प्लेट पर. सो दिस विल हेल्प इन अबाउट डेकोरेटिंग आइटम, एंड एट द सेम टाइम मम्मा ने शुगर सिरप बनाने के लिए इसके ऊपर रख दिया है. तो मैंने मम्मा की हेल्प ली है बटर पेपर को कट करने के लिए. गाइस यहाँ पे मेरे पास है कुकी कटर, जैसे यू कैन सी हेयर, और जो मैंने चॉकलेट मेल्ट की है वो यहाँ पर मैं इसके अंदर डालूंगी, सो दैट विल बी इन द शेप ऑफ फ्लावर, एंड देन वी विल यूज दैट फॉर आवर केक डेकोरेशन. तो यहाँ पर केक कट कर दिया है, एंड नाउ वी विल अप्लाई क्रीम. सो यहाँ पर अगर आपको देखना है कि मैंने क्रीम कैसे बनाई है, सो आप मेरे वो कपकेक रेसिपी वीडियो में देख सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. सो हेयर आई एम अप्लाइंग क्रीम, सॉरी आई एम मम्मा इज अप्लाइंग द क्रीम. नाउ वी हैव अप्लाइड शुगर सिरप, एंड देन सो गाइज यहाँ पर मम्मा कर रही हैं इसकी डेकोरेशन. यहाँ पर मम्मा चॉको चिप्स लगा रही हैं, और मैं So here our cake is ready. It looks so delicious and it was. पता है आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड आप मेरी वीडियोस देख तो लेते हो बट आप सब्सक्राइब नहीं करते, so make sure that you are subscribed to my channel and also hit the notification bell. I will meet you in my next video.